Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to deal with one of my most favorite composition topic and writing, that is expository, also known as the definition essay or the one-word essay. Now, to tell you something about this one-word essay, who should be attempting this composition? Only someone who has an intellectual insight. जब आप उस एक वर्ड को खूबसूरती से समझ पाते हो तभी लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा. ऑल्सो बिफोर यू राइट दैट वन वर्ड मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट वन वर्ड प्रॉपरली टू इट्स कोर. तभी लिखिए. जस्ट एक ब्लेटेंट डेफिनेशन ऑफ वन वर्ड इज नॉट acceptable in expository essay. You know what is the meaning of word expository? Expository का मतलब होता है introduce करना. अब उस एक वर्ड को आप कैसे 4 से 5 अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो, वही उस वन वर्ड का खूबसूरती को उभारता है. तो आपको ये चीजों को अपने दिमाग में रखना है जब आप वन वर्ड लिख रहे हो. एक बार लेट्स रीड थ्रू व्हाट टीचर्स आर सेइंग व्हाइल दे करेक्ट वन वर्ड और द डेफिनेशन ऐसे. This is a one word topic. Any type of composition may be written as long as it is connected with the word friend or friendship, जो कि 25 का टॉपिक था. आपको डिस्क्राइब करना है, आप डिस्क्राइब करो. आपको कुछ नरेट करना है उस वन वर्ड से, जहां पे वो वर्ड आपका सेंट्रल है उस कॉम्पोजिशन का, आप वो करो. आपको रिफ्लेक्ट करना है, आप रिफ्लेक्ट करो. आपको शॉर्ट स्टोरी बनानी है, आप शॉर्ट स्टोरी भी बना सकते हो उस वन वर्ड से. द शॉर्ट स्टोरी विच यू हैड रेड ब्लैक जो मैंने डाला था, दैट वाज एक्सपोजिटरी ऐसे का लेके उठा के मैंने बनाया था, उस ब्लैक को एज अ कोर आइडिया लेते हुए. तो दैट इज ऑल्सो अलाउड प्रोवाइडेड यू मीट द गाइडलाइंस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कॉम्पोजिशन. प्लॉट, characterization, setting, dialogue, and a logical conclusion at the same time. ठीक है. But however, I personally deal one word essay on a very philosophical level. See, I am very romantic sort of a person, and I love to romanticize a lot of things, and there are different philosophical ideas which goes inside my mind, and that is why my way of perceiving one word is very different. And when I train my students, I ensure कि वो लोग भी उस way में उस चीज को perceive करें, डीपर लेवल पे परसीव करे, ना कि लिटरल लेवल पे परसीव करे. एंड वही वन वर्ड का खूबसूरती को उभारता है. ठीक है. आपको अगर लास्ट ईयर का बिट्रेयल पे वन वर्ड वाला टॉपिक पढ़ना है तो आप लास्ट ईयर का एक्सपोजिटरी ऐसे वाला वीडियो देख लो. वत्सला शर्मा, शी हैड रिटन ऑन बिट्रेयल अमेजिंगली, like in a marvelous way she had captured betrayal. आज मैं आपको अपना पढ़ाऊंगा, although my students have written a lot, but then I want you to read this expository essay because it is very close to my heart. ठीक है, this particular topic. So the topic which I chose and wrote on was चांद, मून. आई होप आपको अपने लवर्स की याद आ जाए इस मून को पढ़ के. ठीक है. And I won't say much, rather my composition will speak for itself, like how you have to go about it. चांद क्या है मेरे लिए, आइए देखते हैं. What is moon to me? The moon does not speak, yet she says everything. She rises with grace. Now, on a deliberate attempt, I have given a feminine gender to moon. ठीक है. Although moon is associated हमारे हिंदू में चंदा मामा के थ्रू, मेल जेंडर के थ्रू एसोसिएट किया गया, बट देन मेरे लिए moon is like my companion, so she is a female to me in my per se and in my perspective. So she rises with grace, draped, covered in borrowed silver, never asking for attention but never going unnoticed. The moon is a quiet companion, never speaking because moon is silent, celestial body hai, never speaking yet always present, listening to the heart's unspoken thoughts. आप आसमान में चांद को देखते हुए अपने थॉट्स को वॉन्डर ऑफ करते हो, एंड मून इज अ टेस्टिमेंट टू दैट. वो आपके सारे मन की बात को जानता है, चांद. शी डज नॉट रश, शी टेक्स हर टाइम, easing into the night like a gentle guest, softening the harshness of the darkness with her glow. The stars may sparkle and the winds may sing, but it is the moon who hums the lullaby of the sky. Lullaby is लोरी. चांद है जो कि पूरे आकाश को लोरी सुनाता है अपनी रोशनी से. The moon hums a silent lullaby to the stars,
swaying night into peace with each passing phase, adding to the peace of the night. She watches over the world without judgment. Moon judge नहीं करता है. चाहे mountain tops हो, from mountain tops to city rooftops, from oceans that rise and fall to children drifting into dreams. जो कोई भी हो, मून सबके ऊपर नजर रखता है और बहुत पीसफुली नजर रखता है. The moon sees it all and says nothing. The moon walks the night sky in silence, watching over the dreamers with a gentle, glowing gaze. So, moon is also capable of holding the dreams of others. सपनों को सहेज के रखता है लोगों को. वो चांद आके ही लोगों को मौका देता है कि वो लोग सपना देख सके रात में. ठीक है. She is a painter too. Each night she dips her light in silver. Maybe moon is like a paint brush. जो सिल्वर में अपने आप को डिप करता है, the color silver, and splashes it across the sea, the sand, the leaves. She paints shadows, not to frighten, डराने के लिए नहीं, but to remind the world that even in darkness beauty exists. कि अंधेरा में भी सुंदरता हो सकता है. The moon smiles through the darkness, not to banish, remove it, but to soften the edges of the darkness. And yet, the moon is no stranger to pain. Her face is marked with scars. चांद में दाग है. Reminders of the ancient battles with time and stone. But she wears them with dignity. The moon wears its scars with quiet pride, glowing not despite them, but because of them. दाग के वजह से ही चांद खूबसूरत है. हर खूबसूरत चीज में दाग होता है. ठीक है. She listens to the ocean's longing and answers it with tide. समुद्र की पुकार को मून समझता है. पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, there is a high tidal movement in the water bodies. So it is moon responds it through the tides, tidal motion. ठीक है. So she listens to the ocean's longing, desire, and answers it with tides. She listens to the poets and give them verses. कितनी सारी कहानी, कितनी सारी poems moon के ऊपर लिखी जाती है. She listens to the broken hearted. टूटे दिलों को भी चांद ही जोड़ता है लाके या बाम लगाता है उस पे. So she listens to the broken hearted and reflects their sadness in silver silence. The moon listens to the sea's yearning desire and answer with the ebb and flow. Means coming and going back, retreating back. That is ebb and flow. Movement of silver touched tides. Above all, moon is patient. धीरज है चांद में. She never demands the spotlight. She doesn't compete with the sun. She knows her time will come, and when it does, she rises. Calm, radiant, whole or in part, never ashamed of her phases. Each night, the moon rewrites the sky, not with words, but with light, reminding us that beauty does not need to speak. The moon is not just a celestial body, she's a gentle guardian, a silent storyteller, a mirror for the soul. She reminds us that even in silence there is presence, and even in darkness there is light. That is what moon is to me. ठीक है. So my way of approaching any sort of expository composition has always been and will always be is using personification. I just love this one figurative speech and the literary device that is personification. किसी भी inanimate object को आप personify कर दो, उसको एक character बना दो अपने में and उसके through उसको समझाओ कि उसका actually में nature या characteristic कैसा है, अपने आप वो beauty आ जाता है और elevation हो जाता है in the expository essay. So I hope this video helps. Only if you are insightful, thoughtful, philosophical, then go for it. Otherwise मत करिएगा इसको, आपका नंबर भी कट सकता है. ठीक है. So have a great time preparing for your examination. If you're liking my content, then don't forget to like, share, subscribe. I'll see you in my next video with the reflective composition. Take care. Bye-bye.